हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट। और आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ एक और बहुत ही बेहतरीन कोर्स। जैसा कि आप सब लोग जो भी मेरे followers है, especially on LinkedIn, now they have seen that I usually share the post on the valuation and other stuff. So this time I have come up with a course on how to make a value investing. So for this purpose, first, let me introduce myself. I'm a qualified chartered accountant and working with one of the big four, that is PwC. And along with, I have a 4+ experience and in the assurance services, where we also perform some of the valuation tasks for some of the clients. Apart from this, I am also mm, uh, a certification holder from the Grant Thornton Bharat on the subject matter of uh, international financial reporting systems and the financial modeling and valuation. And thereafter, we have a lot of certification, I can say, for the different things to perform different aspect of financial matters. So I believe these credentials are pretty much fine and for my audience to give a weightage to my views and to derive something beautiful that can help them to make some decision making, and which can help you to become a more financial literate and making some financial decision making. So that is the overall goal of this course. But ये सभी वीडियो I will be providing on one of my YouTube channel, that is Finsight, and I will sharing the link with you guys for this purpose. So जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आपको YouTube पे ये वीडियो बहुत ही पसंद आता है और आप समझते हैं कि ये कुछ वैल्यू एडिशन आपके लिए कर रहा है, तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब and like, so that it helps me in a various way, especially in the motivational way, that I make such more content. I don't have any type of ulterior motive to make money from this course, just like the other people does in the YouTube. They just come up with the boot camp thing and then ask you to enroll their courses with the half day amount and make money. This is not the purpose. This is the totally free course, but don't consider it is a useless, because it is free, but it is worthful, not the worthless. उसके बाद में हम दूसरा, एक और मेरा जो ऑब्जेक्ट और पर्पज है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। एक वर्कफोर्स तैयार करना। 1 साल के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट है कि एटलीस्ट आई एम एबल टू मेक द चेंजेस in the people's life of at least 1,000 students who are pursuing their MBAs, CFAs, or some other courses. And those people who are very, very much keen to interest, keen to learn the finance, valuations, investment philosophies, and wanted to devote their career into the finance stream. So that is the basic purpose on my what I call my introduction for this course. So हम ज़्यादा बड़ा ये वीडियो नहीं बनाएंगे आज। ये एक सिर्फ what I call इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा हमारे इस वीडियो का। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कुछ एस्पेक्ट्स जो हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा होता है that is, I can provide you some spotlight. That's the new tools I'm not aware of anything. So first point is, what is fundamental analysis? And apologies, if I haven't shared the thing, like I will be talking in Hindi or English. It's like using the both bilanguage in my course, because of the reason, because I might having the audience in the both languages.
But if you have a preference over something, then it might be requiring some more work from more side, and that I believe might be a little bit charging for you guys. So it's to making those courses converting into the particular one language, whether it's English or Hindi. तो चलिए शुरू करते हैं आप. सो पहला चीज जो हम पढ़ रहे हैं, व्हाट इज ए फंडामेंटल एनालिसिस. फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? देखिए, अगर आपने दो शब्द सुने होंगे, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस. देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस अगर मैं आपको कहूँ कि फंडा मतलब इसका फाउंडेशन क्या है, तो ये समझना होगा फाउंडेशन क्या है. फाउंडेशन आपको समझना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड ए फंडामेंटल एनालिसिस. किस ऑब्जेक्ट के लिए वो बना है, या मैं फिर मैं कहूँ तो एक जिस प्रकार से हाउस की नींव रखी जाती है, बेस रखा जाता है, और उस बेस को अगर आप स्ट्रांग रखते हो तो कितनी ही वॉलेटिलिटी हो, कितना ही कुछ हो, लेकिन वो मकान स्थिर रहेगा, खड़ा रहेगा. ठीक है. उसी प्रकार से शेयर मार्केट में भी एक एनालिसिस होता है, फंडामेंटल. बहुत सारे लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं क्योंकि वो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. तो अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में 5 साल 10 साल, तो आपको जरूरी है फंडामेंटल एनालिसिस का. बिकॉज बहुत सारे लोग देखेंगे कि जो प्राइसेस है शेयर्स की, वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती है. बट अगर उन्हें आइडिया है, if those people are aware of that thing, that the fundamental of that particular stock is solid, it's rock solid, and then they are not supposed to be fearful because of the price change in the market. But again, एक caveat यहाँ पे मैं देना चाहूँगा, it doesn't mean that we will ignore the changes in the price. If there's a huge change in the price because of some information that developed on that particular time, then we might require to give attention to that particular development. Okay, but हर छोटी मोटी चीज से हमें घबराना नहीं है. इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिकली पर्पज यही है, हमें पूरा फंडा जानना उस शेयर का. ठीक है. तो हम ये क्यों करते हैं, पहला एग्जैक्ट तो हम क्यों करते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस. फंडामेंटल एनालिसिस का पर्पस ये होता है कि जब हम लंबे समय के लिए किसी शेयर को खरीदना चाहते हैं, तो हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनते हैं, और उस दौरान उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जैसे 5 साल 10 साल, तो उस केस में हम यूजुअली इतना समय नहीं रखते हैं. वी डोंट हैव दैट मच ऑफ अ टाइम टू लुक द स्टॉक एवरी डे, टू सी द फाइनेंशियल्स, टू सी द लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग ईच एंड एवरी डे, व्हाट आर द बोर्ड मीटिंग्स एंड एवरीथिंग. सो बेसिकली एक लंबे समय के इन्वेस्टर के लिए, बिकॉज अगर आप देखेंगे 1 + r⁴n, सो r से बड़ा जो इम्पोर्टेंट होता है रिटर्न में, वो होता है आपका n, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स. कितने साल के लिए आप उसका इम्पैक्ट डालोगे, कितने साल के लिए आपको रिटर्न मिलेगा. तो जितना लंबा आपका टाइम होराइजन है, उतना ही लंबा आपका रिटर्न, उतना ही बड़ा आपका रिटर्न होगा. आप ये समझ लीजिए. इसीलिए एक स्टॉक जिसको लंबे समय तक आप रखना चाहते हैं, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना ही होगा उस शेयर का, और उसी के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है. ठीक है. तो दैट इज द पर्पज ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस. तो ऐसे कोई इन्वेस्टर वाकई में है जो ऐसा करते हैं, तो मैं कहता हूँ यस, ऑल द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लाइक वरुण बफेट, चार्ली मुंगर, and Rakesh Jhunjhunwala, Damani, and these people are the long-term investor, and there are some funds that institutional buyers also make the funds investment for the longer period. Okay, so ये concept है fundamental analysis का, कि हम क्यों करते हैं, why, because we always need to understand why we do this thing. उसके बाद में हमारा दूसरा है कि किस प्रकार से हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम देखते हैं. तो देखिए, उसमें कुछ मैट्रिक्स है. सबसे पहली चीज़ होती है किसी भी चीज़ के लिए उस कंपनी का प्रोफाइल. ठीक है. अगर आज एक कंपनी का प्रोफाइल क्या है, उसको देखना पड़ेगा. जैसे L&T है, L&T कंस्ट्रक्शंस काम करती है, तो उसके सप्लाई चेन, उसका बायर साइड देखना पड़ेगा हमको. उसके अलावा हमको उनका प्रोडक्ट देखना पड़ेगा कि क्या कितने टाइम में प्रोडक्ट करते हैं, कितना उनको कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू मिलता है, कितना उनका रेवेन्यू परसेंटेज है, रेवेन्यू मॉडल क्या है उनका. तो सब चीज़ बेसिक्स जो होते हैं किसी भी कंपनी के प्रोफाइल के, ये उसी प्रकार से, मतलब कि जिस प्रकार से एक बच्चा होता है, उस बच्चे को किस प्रकार से हम बड़ा करते हैं. ठीक है.
इस प्रकार के संस्कार उसमें डालते हैं, वही आगे जाके उसके रिफ्लेक्ट होते हैं बड़े होने पर, ठीक है। तो उसी प्रकार से कंपनी के बारे में, उस कंपनी की प्रोफाइल पढ़ के ही हम ये जान सकते हैं कि वो कंपनी कैसा कर रही है, उस अब कितना वो कंपनी सॉलिड है, कब उसका फाउंडेशन हुआ, कौन कौन उसके प्रमोटर्स थे। तो ये चीज़ होता है उसमें कंपनी प्रोफाइल। उसके बाद में हम कुछ रेशियोज होते हैं, फाइनेंशियल रेशियोज, जो कि हमें फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में कंपनी को बताते हैं, उन रेशियोज को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ हम देखते हैं थ्री स्टेटमेंट एनालिसिस। थ्री स्टेटमेंट एनालिसिस में हमारा क्या क्या आ जाता है वो देख लीजिए आप। थ्री स्टेटमेंट एनालिसिस में हम देखिए क्या क्या कवर करते हैं। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो। ये तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पार्ट है, तीन कंपोनेंट है, ठीक है। हम इन सबको स्टडी करेंगे ड्यूरिंग और कोर्स, और यही जो है हमें बताने वाला है एग्जैक्टली कंपनी की पोजीशंस के बारे में, कंपनी की करंट सिचुएशंस के बारे में, कितना कंपनी बना पा रहा है, कितना कंपनी सेल कर पा रहा है, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में हमारा एक और चीज आता है, फिर स्टेटमेंट एनालिसिस हमने देख लिया है। उसके बाद में डाटा सोर्सेस, कौन कौन से डाटा के सोर्सेस जहाँ से हम डाटा ले सकते हैं अपने एनालिसिस करने के लिए। बहुत सारी वेबसाइट हैं, देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ चॉइसेस। कौन से, और उन उन चॉइसेस का जो लिमिटेशन है वो भी हमें समझना होगा कि कितना रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे आर प्रोवाइडिंग। इफ यू वांट टू गेट द एक्यूरेट नंबर यू माइट नीड टू ट्राई, and not mine, I will say, like, you must try to get the accurate number as much as accurate you can get it, okay। and उसके बाद में उन limitations का solution है डाटा। उसके बाद में हमारा एक और पॉइंट आता है वैल्यूएशंस का, ठीक है। वैल्यूएशन की टू द फंडामेंटल एनालिसिस। सो मेरा मानना है अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है वैल्यूएशन। प्राइस और वैल्यू के अंदर आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, जो कि हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। उसके अलावा आपको आना चाहिए कि क्या वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो है वो सबके लिए अलग हो सकती है। एक बाइक है आपके पास, आपने 5 साल चला लिया उसको, अब आज उसको आप बेचना चाहते हैं, तो आपका मानना है दैट बाइक शुड फैच यू एटलीस्ट 20,000 रुपीज। बट आप एक मैकेनिक के पास गए एंड ही सेड दैट आई विल गिव यू 15,000 रुपीज फॉर दिस बाइक, and you goes to the another mechanic, they say like I will give you 16 or 17. So you can see this value is different, okay, this value is different because each and every person has a different perspective towards that bike and utility for that bike। किसी को हो सकता है उस बाइक का यूज करना है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, किसी को हो सकता है कोई माल है जो एक जगह दूसरी जगह ले जाना चाहता है, he can use the other vehicle also, but if he can get bike into the same price he might use it। so हर किसी का एक अपना पर्सपेक्टिव है, उसके पीछे एक बिलीफ है दैट गिव देम अ वैल्यू, ओके। तो बहुत सारी चीज़ है जिनका वैल्यू एक्चुअली इट्स नॉट इजी टू डिटरमाइन। लाइक आई कैन सी द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, फॉर यू माइट बी नॉट अ वैल्यू, not worth it, but for someone who belongs to their family it might be some heritage property for them, and it could be like worth of 1 million of rupees, right? So value can be different for anything। उसके बाद में हमारा केस स्टडीज हम देखेंगे, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में जो कि मैंने किए भी हैं। और सबसे बाद में है इज देयर अ मोर, ओके, इज देयर अ मोर। सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी है या उसके बाद में भी हमें कुछ करते रहना चाहिए, वेदर वी नीड टू मॉनिटर और समथिंग, ठीक है। तो ये हो गया अपना। उसके बाद में हमारा चलता है सेकंड, देखिए ये हो गया। उसके बाद में हमारे पास में बहुत सारी चीज़ आ जाती है। ये एक और चीज़ आ गई है कि ये सब करने के बाद भी हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना होता है। एक होता है जैसे इंडस्ट्री, सॉरी गाइस, एंड एक होता है इंडस्ट्री एनालिसिस, ओके। एक होता है लीडिंग इंडिकेटर विच विल इम्पैक्ट योर स्टॉक्स।
कुछ ऐसे इंडिकेटर, बिकॉज डे टू डे एक्टिविटीज आई वुड बी to figure out which activities could be substantial and it might incur you loss which would be irreversible. ठीक है, जैसे किसी कंपनी का प्लांट ही गायब हो, प्लांट में ही पूरे आग लग गई, और दैट कंपनी हैज ओनली 2 प्लांट्स, और उस प्लांट में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एसेट्स जो है चले गए कंपनी का. It got burned down and you don't have a particular insurance. Even you have an insurance, but bringing and building the assets is kind of a big deal. उस प्रकार के कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है जो आपको देखने पड़ेंगे. उसके बाद में फिर इंडस्ट्री का एनालिसिस होता है, जैसे फार्मा. कोविड के टाइम पे नॉर्मल पर्सपेक्टिव एवरीवन, इवन द naive could be tell you that pharma would be going up, right? Every day new research and we have to cope up with the COVID issues. उसके बाद में आपको है ग्रोथ पोटेंशियलिटी देखनी पड़ेगी, रिस्क देखना पड़ेगा. व्हाट इज द रिस्क एंड रिटर्न रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक, क्या उसका मूवमेंट है, जो कि जिसके लिए हम यूजली बीटा यूज करते हैं. तो वो हम टूल्स पे डिस्कस करेंगे, क्या क्या टूल्स हम ले सकते हैं फ्रॉम की सोर्सेज. इसके बाद में हमको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स देखना पड़ेगा, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है, कैसे हम उसका नियोजन, ये भी हम डिस्कस करेंगे. कंपनी का बिजनेस मॉडल हमको देखना पड़ेगा, ठीक है. उसके बाद में मैनेजमेंट का क्वालिटी क्या है, प्रमोटर्स कौन कौन है, कितने साल का उनका एजुकेशन बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस क्या है. टूल्स देखेंगे हम, बीटा कैलकुलेटर देखेंगे कि बीटा का कैलकुलेटर ऑनलाइन प्राइस अवेलेबल है और आप एक्सेल के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. द रिग्रेशन मॉडल यू कैन यूज, यू कैन रिग्रेस फॉर दैट. उसके बाद में वेबसाइट फॉर इनसाइट, कुछ इनसाइट्स आपको अगर चाहिए तो उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट है, बट कौन सी वेबसाइट है जो मैं यूज करता हूँ वो आपको बता सकता हूँ, और वहाँ पे बहुत सारी चॉइसेस आप रखते हैं, तो यू कैन यूज दैट टू. उसके बाद में मेरा मानना है कि आपको यूज करना चाहिए, चलो ये बहुत है मेरे हिसाब से इतना आज के लिए. उसके बाद में एक चीज़ है जो हम वैल्यूएशन और मैथोडोलॉजीज क्या क्या है वो भी पढ़ेंगे. उसके बाद एक सेशन हम रखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है, और कुछ क्विज़ेस भी हम रखेंगे थ्रू आउट द पीरियड. कुछ उसके बाद में सम माइंड ब्लॉविंग डिस्कशंस आई वुड लाइक टू हैव यू गाइस, गिव यू सम मोर पर्सपेक्टिव ऑन सम अदर पॉइंट्स, लाइक इबिटा क्या होता है, और इबिटा जो कि एक मेजर प्रॉक्सी है कैश का, तो इबिटा ही क्यों है, व्हाई आई कैन नॉट टेक द इबिट. We will have some thought-provoking discussion on those points. और दूसरा मेरा है पॉइंट है क्या, टेक्निकल एनालिसिस कैन एक्सेलरेट योर गेम, बिकॉज फंडामेंटल आप कर रहे हो, यू गाइस आर डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस, बट क्या टेक्निकल कर सकता है, तो करेगा तो कैसे करेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद में हमको एक ट्रेडर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के बीच में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. तो आप क्या बनना चाहते हो, दिस थिंग्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टर फिलोसफीज. ओके, आप ट्रेडर बनना चाहते हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना, बिकॉज ट्रेडर इज समवन लाइक who do trade every day. You're going to pay a lot of money to the broker account to make a lot of trades every day. And if you become a trader, there are some cautions you have to be taken care of because of being trader. Because I have seen that very few traders get successful, and otherwise it's the broker who gets the substantial part of your money, because every time you got to make a trade in a day, he will make some sort of amount from you. So you have to understand your broker statement, like what's going to be piled up for you. There is some sort of a charges, broker commissions and all, or you wanted to trade something, because मेरा मानना है, और इस कोर्स का जो पूरा डिजाइन करने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, तो स्पेशली उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल दोज आर वर्किंग बट दे वांटेड टू मेक इन्वेस्टमेंट, और not everyone is chartered accountant, not everyone is coming from financial backgrounds like MB finance or something. So there are some engineers people, there are some doctors who may not be directly investing into the market, maybe using some route of investing, but at least they are aware of where they are investing. They should be able to ask the answer to those people with whom they are investing. Okay, risk and return trade-off we will discuss, not a big thing. Okay, I think that's all from our side. And yeah, this is my YouTube channel, Valuation Scholar. Again, this is another channel that I have made especially for the valuation purpose. So the courses which will be related to the valuations would be done here, especially. And the other things would be done in the fin side. So
Miravan, I think that is all from my side. And if you have taken this session and you feel like something fruitful would be, you would be able to learn, because and you haven't uh, deep dive into the things, I believe you should join and subscribe the channel and click the bell icon so that you can get uh, the all real time information about this fundamental analysis course. People are charging a very hefty amount, even 5,000, 10,000 for this course. But I'm kind of a new guy, so I'm coming up with some object, because I know one thing, that the things which are given in free are never valued. But I'm giving it a try to understand what my audience wants to do with that, whether they wanted to just really wanted to learn, or they are just doing time pass or something. So guys, please like, share and subscribe if you like the session. This video will be soon available on the in the YouTube and as an introduction. Uh, if you wanted to give me some more ideas about teaching skills, because I'm a new, at which I can, what I call, incorporate it in my next session, uh, you are most welcome. And please give a comment if you really like the content, and what is the real thing that you want to learn out of these all aspects if you have already covered somewhere in the sessions. And इसी के साथ बाय बाय कहने का मन नहीं है, लेकिन हमें हमें ये सेशन खत्म करना होगा. So thank you very much for coming along the way for this much of time. Thank you very much, and hit the subscribe, like button, and bye bye. Have a good day.